हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस इन जावा एंड इनहेरिटेंस इन जनरल वी विल डिस्कस बोथ टॉपिक। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं ये बता दूँ, इनहेरिटेंस ओनली वर्क्स विद क्लास इंटरफेस एंड ऑब्जेक्ट। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज दिस। सो जो लोग भी क्लास इंटरफेस और ऑब्जेक्ट ये तीन टर्मिनोलॉजी से अवेयर नहीं है, प्लीज हैव अ लुक, have a basic knowledge about this, and then join this session. You guys will feel comfortable for this. So शुरू करते हैं inheritance. In real world, whatever you guys understand about the inheritance, the same concept is going on into the programming language. Like as I am inheriting my father attribute, my father is inheriting my grandfather attribute. So this way the hierarchy is going on. So inheritance in a programming world is having the different types. So we will discuss about those types also. Let's move to the next. So here we know that. Let me read the first line. And inheritance is one of the feature of ops which create new class from an existing class. So I hope everyone is familiar with this. Okay. So मैं फिर भी समझा देता हूँ एक बार के लिए। एक क्लास, कोई आपके पास ऑलरेडी एक क्लास है और आप चाहते हो कोई दूसरी क्लास बनाना, और आप उस क्लास से बना रहे हो, तो जो आपकी नई क्लास है वो क्लास आपके एग्जिस्टिंग क्लास के फीचर को भी होल्ड कर पाएगी। दैट इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस। बट यस, देयर इज द स्कोप रिजोल्यूशन ऑफ योर data member methods and data. This is totally depend upon how you want to implement those things. So we will discuss later, but right now here we are going to talk about the types of inheritance. So single, multiple, multi-level, hierarchical, hybrid, and multi-path inheritance. As you can see that there is the hybrid inheritance that is going to rock. So hybrid inheritance is a combination of multi-level and multiple inheritance, where the multi-path inheritance is the combination of the single, multi-level, and multiple and hierarchical inheritance. So this is going to very a big boom. So let's see. And here is the one more concern is that how many inheritance Java support, and if Java is not supporting, so how it is going to achieve this one. We will discuss about that also. So let me introduce with the single inheritance in the programming world. Single inheritance, in that case हमारे पास एक क्लास है और एक हमारे पास क्लास बी है, और हमने क्या किया, क्लास बी ने इनहेरिट कर लिया क्लास ए को। सो क्लास बी के पास क्लास ए का पूरा फीचर है। दिस वे इट इज वर्किंग। सो सिंगल इनहेरिटेंस में केवल दो क्लास पार्टिसिपेट करेंगी, दोनों के बीच में इनहेरिटेंस होगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। लेकिन इनहेरिटेंस होगा कि क्या मतलब है कि जो भी क्लास ए का डेटा मेंबर मेथड है हमारे पास, वो सब एक्सेसिबल होगा क्लास बी में, अगर उनका स्कोप रेजोल्यूशन प्रोवाइड, मतलब उसको अलाउ करता है। स्कोप रेजोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं? अगर मैं जावा में बात करूं तो जावा में हमारे पास कितने प्रकार के हैं? वो हैं, हमारे पास डिफ़ॉल्ट है, डेटा मेंबर मेथड की बात मैं कर रहा हूँ क्लास के अंदर, तो वो डिफ़ॉल्ट है, प्राइवेट है एंड पब्लिक है, दिस थ्री। एंड अगर मैं सी शार्प की बात करूं तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट है, प्रोटेक्टेड है एंड पब्लिक है एंड something like in mid of public and protected, somehow that scope resolution also available there. And in a Java earlier, I think very early in a Java, the mechanism is available into here. After that they just remove that feature of that scope resolution. You guys take a look on that over the internet for about the scope resolution, or you can say that access modifier. You can search about this, you will get it. Let's move to the next. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है कि एक क्लास एक दूसरी ऊपर की क्लास को एक्सेस इनहेरिट करती है, और जिसको वो इनहेरिट करती है वो क्लास भी किसी और को इनहेरिट करती है। मतलब कि ये मल्टी लेवल हो रहा है, लेवल बन रहे हैं। जैसे आप मकान बनाते हो, एक ग्राउंड फ्लोर बनाया, बेसमेंट बनाया, फिर ग्राउंड फ्लोर बनाया, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिर फोर्थ फ्लोर। सो दिस वे मल्टी लेवल की अगर बात होगी तो आप सीधे अपने मकान को देखिएगा, बिल्डिंग्स, एक फ्लोर, दो फ्लोर, तीन फ्लोर, टॉप टॉप टॉप। सो एक क्लास एक्सटेंड करेगी ऊपर की क्लास को, फिर उसके ऊपर की क्लास ऊपर वाले को एक्सटेंड करेगी। इस तरीके से वो इनहेरिट करते हुए नीचे तक जाएंगे।
सो क्लास सी जो इस डायग्राम में आप देख रहे हो, तो ये क्लास सी अगर क्लास ए के किसी भी डेटा मेंबर को एक्सेस करना चाह रही है तो ये डायरेक्टली एक्सेस ही नहीं कर सकती। तो क्लास बी के पास अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन है जो कि सप्लाई कर सकता है डेटा क्लास सी को, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल आपने देखा, मल्टीपल देखा। सो मल्टी लेवल की जब भी बात होगी, आप अपने बिल्डिंग को देखना कि कैसे कैसे आप फ्लोर बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड मल्टी लेवल। मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात होगी तो इसमें सीधा है, एक क्लास है जो कि मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट कर रही है। मल्टीपल, फॉर एग्जाम्पल योर रिलेशनशिप, लाइक दैट you are related to your father and your uncle both, so you are keeping the attribute of your father and your uncle as well. So this is the good example for the uh, multiple inheritance. तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में बेसिकली क्या है, क्लास सी है और क्लास सी ने इनहेरिट किया है क्लास ए एंड क्लास बी दोनों को। दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल इनहेरिटेंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में हम क्या कर रहे हैं, इसमें आप देख सकते हो एक क्लास ए है जो कि शेयर्ड, जो कि इनहेरिट हो रहा है क्लास बी और क्लास सी से। जबकि अगर मैं मल्टीपल की बात करूं तो मल्टीपल में एक ही क्लास दो डिफरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है, मतलब होल्ड कर रही है। बट हायरार्किकल इनहेरिटेंस में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हायरार्किकल में रिवर्स हो रहा है, लाइक दैट योर फादर, योर सिबलिंग्स, like as your father having the two kids and your brother, so you are also holding the same attribute of your father, and your sibling means your younger brother or whoever is the family member, that is also holding your father attribute. So that is the exact example of hierarchical. Hierarchy is going on. So whenever it comes up in a hierarchical, you have to see the hierarchical management hierarchy. This way. So here you can see class A, class B, class C, and class B having the class D, class E, and class C having the class F, class G. This way. Let's move to the next, hybrid inheritance. So guys, this is very interesting. Here is participating. You can see this is the one class, this is the class, this class having this, and this is the example of multiple inheritance. Are you guys getting me? Multiple inheritance. So hybrid is a combination of multiple inheritance and hierarchical inheritance. How it is the multiple inheritance? हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस की क्या बात करी थी कि एक क्लास जो कि मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट करती है, उसको, उस टाइप के इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो अगर हम देखें हाइब्रिड में, तो क्लास सी जो है वो इनहेरिट कर रही है दो क्लास, क्लास ए एंड क्लास एफ। तो ये दो क्लास को करिए, यानी ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस इसमें कहाँ है, तो मैंने जैसा कि बताया कि एक क्लास दो क्लासेस से इनहेरिट हुई है, दो क्लासेस ने किसी एक ही क्लास को इनहेरिट किया है, शेयर्ड है। क्लास ए इज शेयर्ड बिटवीन क्लास बी एंड क्लास सी, दैट इज कॉल्ड हायरार्किकल। Class B again shared with class D and class C, that is called hierarchical inheritance. So hybrid inheritance is the combination of multiple inheritance and hierarchical inheritance. Let's move to the next, multipath inheritance. Here, multipath inheritance, what it is having the, first of all, what I can see, one class shared among the three classes, class B, class C, and class D. This is called multipath inheritance. But guys, this line which is showing, it is not directly inherited. It is indirectly connected with this. The way I am talking about the very first multi-level. So in a multi-level, we talk about class A, class B, and class D. So if you want to access the class A information into the class D, तो ये तभी possible है जब class B में वैसी implementation हो. So indirectly I am showing here, indirectly it is connected with this. So
नेक्स्ट इसमें एक और इनहेरिटेंस पाया जाता है विच इज कॉल्ड द हायरार्किकल फर्स्ट क्लास ए विच इज हैविंग द क्लास बी क्लास सी जो कि इन दोनों क्लास के बीच में शेयर्ड है और क्लास डी में इनडायरेक्टली शेयर्ड है। अब हम आते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, वो भी इसमें पाया जाता है। जैसे आप देख सकते हो क्लास बी क्लास सी दोनों क्लास को क्लास डी जो है वो इनहेरिट कर रहा है, इन दोनों का एट्रीब्यूट रखा है। उसके बाद हम एक और देख सकते हैं मल्टी लेवल जो कि क्लास ए क्लास बी एंड क्लास डी ये तीनों को डिफाइन कर रहा है। तो इसमें जो आपके पास कॉम्बिनेशन है अगर आप देखें तो सारे इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन है। पहला क्लास ए क्लास बी द सिंगल इनहेरिटेंस इट इज शोइंग। नाउ नेक्स्ट the hierarchical inheritance class A is inherited by class B and class C indirectly class D, so this is called hierarchical inheritance. Next आते हैं multi level class A class B and class C, this is the multi level inheritance. Multiple inheritance class B class C get inherited by class D, this is called multiple inheritance. Now let's talk about कि ये सी शार्प में यहाँ पे जो इसको हम करते हैं तो सी शार्प में इसको यहाँ पे सी शार्प में नहीं इन जनरल यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये किसकी इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू जाए कैसे पहचाने, तो उस प्रॉब्लम का नाम है डायमंड प्रॉब्लम। तो जब भी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में इनहेरिटेंस स्पेशली उप्स में अगर आपको बोला जाए व्हाट इज द diamond problem, so you guys can directly refer the multi-path inheritance. Only here it exists and we resolve. So different programming language में इसको resolve करने का different तरीका है। So guys जावा की बात करते हैं। जावा क्या क्या सपोर्ट करता है इनहेरिटेंस में, तो जावा सपोर्ट करता है सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, मल्टीपल को भी सपोर्ट करता है बट विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस, हाइब्रिड को भी सपोर्ट करता है बट विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस, मल्टीपाथ को भी बट इंटरफेस। तो इंटरफेस की मदद से ये अचीव कर लेता है, बट अगर प्योरली देखा जाए तो कितने को करता है, तो सिंगल, मल्टी लेवल एंड हायरार्किकल। हायरार्किकल में आप देख सकते हो, आपको जैसे कि बताया हायरार्किकल फैमिली relationship, so this way class A class B class C, so this is very why it is because of these keywords. Let me explain you these keywords. Use of extend and implement. So inheritance Java में अगर आपको perform करना है तो you can only using of these two keywords you can perform your inheritance. For example, extends. If you are working with the two class, you have a class A, class B, and you want to create the inheritance. You want to inherit the class A into the class B. So you have to extend. You have to use the keyword extend. So class A extend class A, class B extend class A. This is called the single inheritance. But extend support only the one class to extend at a time. So only because of this multiple inheritance is not possible using the classes. But yes, this same extends keyword support the multiple interfaces extending at a time. So use of the interface we can done our the multiple inheritance. Implements keyword. Whenever you declare the interface and you want to implement that into the particular class, so you have to use the implements. So basically you use the class implements, and implements support the multiple interfaces to implement, like that class A implements interface B, C, D, E, F, G, H, whatever n number of this. So this way you can achieve. So okay guys, thanks. I have only the information about the interface, but yes, in the next session I'll come with the practical of the inheritance. So there we do the practice over the IDE. We create using the Java snippet code, and we will run that, and we will check that how it is getting created. Each and every inheritance, single, multi-level, multiple, hierarchical, hybrid, multipath, every interface we are going to implement using of IDE. So next session I will be there with this exciting snippet code. So that will be exciting to create this one into the ops using the Java, and experience that how it is working, how it is functioning. So I hope you guys like this one.
and it is helpful for increase your knowledge and helpful for remembering the different types of inheritance. So thank you. Bye bye.